they would all come to our place in procession and we shall feed them. This program should be started immediately. And so that the whole day and night this nuisance will go on. Maybe we should occupy the LIC grounds in Huh? Delhi with kirtan. Huh? We should occupy the LIC grounds in Delhi with kirtan. Now you are jumping over. Now the question is in Bombay. We are jumping in Delhi. But they asked us in LIC the same thing. They asked us to leave LIC grounds because the kirtan was. No, that's all right. That chapter is now I see. in prominence. Don't come here. The daughters here. That they are planning the same plan as they did. This is the preliminary sign. Our program in different streets, in the houses of different people, and Sankirtan should be start from there. So do it. So don't speak now. Organize. Now there is no question of speaking. Practical. Everyone should take a leading part. And the Sankirtan nuisance should be started from Bombay. So, Balwant Prabhu, you are taking? Yes. Yes. Assistants selected, so many sannyasis and do it. You take the leadership. Yes. That is his intelligence. And we shall pollute the whole world with this nuisance. Become an exemplary Goswami. To give fight to the Goswamis here. You are, how many years you are in Vrindavan? Huh? How many years you are here? 2.5 years. 2.5 years. Now, you should represent Rupa Goswami and you should challenge them. You are not Goswami, I am Goswami. But you have to be exemplary. Do you know what is the definition of Goswami? One who works hard for Krishna day and night and one who controls his senses. Yes. That is the first thing. Vacha vegam, krodha vegam, udara vegam, upastha vegam, manosa vegam, etan vegan ja vishayeta dhira, prithivingsa shishya. One who can control these kinds of urges, vacha vegam, talking nonsense, that is called vacha vegam. Krodha vegam, anger. Urges of the mind. Mind dictates, do this, do that. Then udara vegam, eating, vegam. I eat more. Udara vegam, upastha vegam, genital. When one can control the 6 vegam, urges, then he is fit for becoming Goswami and he can make Shishya all over, Shishya, disciple all over the world. Prithivingsa Shishya. This is Goswami. Not that एक बिजनेस कर लिया है भागवत सप्ताह कहीं भागवत सप्ताह है इज देयर एनी मेंशन भागवत सप्ताह इन द भागवत ऑफ
There are so many big commentators. I have never recommended. This business is going on. They are holding Bhagavad Saptaha and bringing money and employing it for the son's daughter's marriage, very opulent. And their supporters, they are also invited. They say, here is a Goswami. This is going on here. Son of Goswami, there is not a single Goswami, at least visible. What is that? Bhaja Begam, Krodha Begam, Udara Upastha Begam, control. And where is that Prithiving Shishya? All world wide. Yes, disciples. Where? Where is that Shishya? Huh? I may be whatever, that's all. This is the definition of Goswami. Besides that, there are other many things. Nana Shastra Vicharanayika Nipunam Sadharma Samasthapakou Lokanang Hitakaninam Tiruvane Mannam Saranakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajananandi Namattalikau Mandi Rupasan. So, Nana Shastra Vicharanayika, one must be very conversant. All kinds of shastras. And what for? For establishing real religion. Real religion is this. Sarvadharman Parityajya Mamekam Saranam Bhaja. Why there are other religions existing? That means there is no Goswami. If there is Goswami, he should stop functioning all other rascal religions. Simply this, Mamekam Saranam Bhaja, that religion. That is religion. It's all a bogus thing. The Goswami has to prove that. Nana Shastra Vicharanayika, Lokanang Hitakani. Why? For the benefit of the whole human society. Therefore, they should be honored. Tiruvane Manu. Not that within some neighborhood. All over the world. Tiruvane. That is Goswami. What is this Goswami? Tiruvane Manu Saranakaro. He is fit to take shelter of. Cheating Goswami. Cheating Goswami is not good. I also the first day kicked the panda out because he wouldn't eat prasadam with us. He said, I am Vaishnava, I cannot eat amongst you. So I said, then we cannot hear from you. Go immediately. The first day. And that's how that. Go and have tea. Money, but not your prasad. Yes. Money is pure. And prasad, because it is offered to Krishna, it is impure. Just see their argument. Money is pure. Even you can give me with your hand as much as you like. Because it is pure, I will take it. And so far prasad is concerned, because it is offered to Krishna, therefore I cannot take it. Oh yes, she has got the power. Shaktimati. The police commissioner has remarked this bhajan is nuisance. So you have to agitate. There are so many Vaishnavas. Bhajan is nuisance? Huh? So there must be some big agitation to drive away this man. The demand should be that this man should be immediately removed. He has focused a sarcastic remark on a very pure religious system
This movement should be stopped. He must be removed immediately. The whole protest marches Yeah. downtown. Yeah. God. Large scale protest. All the Vaishnavas will come Yes. with us. You have to organize all. There are many Vaishnavas. Huh? In the Bhagavad Gita, it is said, Satatang Kirtantam Ma. One has to chant Krishna always. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Kirtaniya Sadahari. And this rascal is saying nuisance. So it is not possible to invoke an agitation against this. What right he has got to say nuisance? He could have spoken in a sweet language that the bhajan may be very good for the devotees, but it creates disturbance to the others. Therefore, we cannot allow. I say like that. But they cannot still stop bhajan. But he has remarked the bhajan nuisance. This very word will kill him if you make proper agitation. That means the whole government is feeling that way. Otherwise, he would not feel strong. And that is a and saying, fact, but we have to become strong. Yes, you must defeat them all. We can mainly single out him. Huh? We can mainly single out him for now and Make an protest against him. example. Make him the example. Make an example of him. The man in Bombay. The government leader. There are many parties in Bombay, Kirtan party. You have to organize them and bring them. Chant Hare Krishna everywhere. Create this nuisance. And Maharashtra is the country of Tukaram. He organized Kirtan. Still, the Tukaram Kirtan parties are there. Vitthal. Vitthal means Krishna. And ideal Goswamis should remain here to challenge this false Goswami. But if you also become false, then you cannot challenge. Thugs have come. You can talk with them. Mr. Gupta. The Pathaks, they have come. Hare Krishna. जय हो. काम करने के है. हाँ. You have sufficient quantity of grains, then you are dhanava. This is all false. So-called dhanava. ये जैसा आपका स्कूटर है, वो जब तक चालू है उसका कुछ कीमत है, और जहाँ चालू नहीं फेंक दो कुछ काम नहीं. वो धन है, बेचने से उसको 2 पैसे भी नहीं मिलेगा. ये सब धन नहीं है, ये सब मिसलीडिंग. आदमी को गधा का ऐसे केवल परिश्रम कराता है, वो धन है. अन्न और गौ. शांति में अन्नाद भवन्ति भूतान. ये कृष्ण कहता है, अन्नाद भवन्ति भूतान. If you want to flourish, you must have sufficient grains. Where is that grain? सब पड़ा है ऐसा. समझे ना? अन्नाद भवन्ति भूतानि. आप लोग तो सब ब्राह्मण है, आप तो समझते हैं. तो अन्न नहीं है तो फिर ताकत क्या है? भूखा मार के खाली लेक्चर सुन के ताकत बढ़ जाएगा. ये सब चल रहा है. लेक्चर. व्हाट इज दैट लेक्चर? वेयर इज अन्न? भजन्ति सुमेधस. कलियुग में यही संकीर्तन है.
ये हम लोग चलाते हैं तो गवर्नमेंट में न्यूसेंस है। गधा ऊँट इसको सब भेजते हैं, सबीर बिड़ाह सबीर बराह उष्टक खरोई संस्तुत पुरुष पशु। और सभी जितने गवर्नमेंट मैन है कौन है? 100 माने कुत्ता है, और बीर बराह गू खाने वाला सुअर है, और बीर बराह अनुष्ट ऊँट है, और खर गधा। इसी को बस प्रशंसा करके आप लोग गवर्नमेंट बनाते हैं। फिर आप गवर्नमेंट के पास जाने से क्या मिलेगा? उष्ट से क्या मिलेगा? कोई कांटा मिलेगा वो जो खाता है। सभी सब भागवत में विचार किया, जो भगवत भक्त है ही नहीं वो यही सब पशु का शामिल है, कुत्ता, ऊंट और गू खाने वाला सुअर और गधा। तो इसी का गवर्नमेंट है और इसी को हम लोग खूब ताली देते हैं। देखो एक बड़ा भारी ऊंट आ गया, हट 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 हट, दिस इज गोइंग। तो ताली बजाते हैं, वो भी एक ऊँट है, छोटा ऊँट है, वो बड़ा ऊँट को ताली देते हैं, बस ये चलता है। सब असंस्कृत है, संस्कृत संस्कार भवित द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के संस्कार होना चाहिए। क्या संस्कार है? कोई संस्कार नहीं। गर्भाधान संस्कार नहीं है, और जो गर्भाधान संस्कार नहीं होता है जिस फैमिली, वो ब्राह्मण फैमिली उसी वक्त शुद्र हो जाती। संस्कार भवित द्विज, ये सब शास्त्र का विचार है। असंस्कृता क्रियाहीन म्लेच्छा राजन्य रूपिण, और जिसका कुछ संस्कार हुआ नहीं और कार्यक्रम में कुछ नहीं है, असंस्कृत क्रिया म्लेच्छा, आचार में सब म्लेच्छ है, ये सब राजगद्दी में बैठ जाएंगे। ये कलियुग का है। तो उससे क्या उपकार होगा? जिसका कुछ संस्कार है ही नहीं, जिसका कुछ कार्यक्रम नहीं है और आचार में म्लेच्छ जमन है, वो सब म्लेच्छा राजन रूपी वो क्या करें? जहाँ से लूट करके पैसे ले आओ, हमारा पकड़ मिले। उसका रास्ता तो दिखाओ, हम उसका रास्ता तो यही है जो कृष्ण कौन सा बस हम है, रास्ता तो यही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, दिस इज ओनली रास्ता। एजिटेशन करो, सारा दुनिया में केवल हरे कृष्ण चले, देखो सब सुधार हो जाए। चलेगा ही चलेगा। अभी हम पंजाब में जाकर शोर डाल देंगे। उपाय बहुत सरल बता दिया है शास्त्र में, हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ति वो नास्ति, इसने लेता ही नहीं, क्या किया जाए? देखना ही पड़ेगा। नेचर भी ऐसी है, डट गए मैदान में तो पीछे हटने वालों में नहीं है, चाहे जान जाए प्राण जाए कुछ नहीं। उपाय बड़ा सरल है। चढ़ा दिया है चेत तत्पणमार्जनम भव महादावाग्निदाव परम विजय थी श्री कृष्ण संकीर्तन, कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण मुक्त संग परम विजय। ये सब तो शास्त्र ने निर्देश दिया है और यही हम लोग चला रहे हैं। जो किसी तरह से हरे कृष्ण बोलो, और मूवमेंट इज हरे कृष्ण मूवमेंट, एवरीवन नोज। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। वो मूर्ख हो धनी गरीब सभी कोई बोल सकता है, इसमें क्या मुश्किल? ब्राह्मण पंडित और चमार सब एक साथ में बोल सकता है। कल थोड़ा टाउन में गई थी, उसी तरह एक थोड़ी ललानी की दुकान से उन्होंने डिवोटी ने किसी ने रंग लेना था, क्योंकि यहाँ के सब हिंदी जानते हैं और इनकी इंग्लिश भाषा समझ नहीं सकते, तो मुझे साथ लेकर गए। तो वहाँ बैठे बैठे थोड़ी सी बातें मैंने शुरू की, तो कहने लगे आप यहाँ से जाओ नहीं, आप क्या समझते हैं? कहते आपकी बातें इतनी सुंदर लगती है कि देखो सारा कुटुंब आकर बैठ गया है। ये तो हार्ट का बात है ना। तो मैंने कहा इतने में नहीं, एक मैं ही मेरे मुँह से सुनते हो इतना ही काफ़ी नहीं है, आप जाकर हरे कृष्णा टेम्पल में जाओ, अपने यहाँ जाकर कोई भी जो भी डिवोटी कहेगा हमसे भी ज़्यादा सुंदर कहेगा, सुनने की कोशिश करो, बुक्स बनी हुई हैं, पढ़ने की कोशिश करो, सबका कल्याण हो जाएगा। तो कहते हाँ हम जरूर आएंगे, और आप जब भी आओ हमको मिलो। मेरी क्या आशा रखते हैं? मुझे छोड़ो, यहाँ अनेक पैदा हो चुके हैं। आप तो माता जी है, और सब पैदा कीजिए। बहुत हो जाएंगे आप तो
just like Dhritarashtra to the Prabhupada. Huh? Just like Dhritarashtra, still they are told that Krishna is God, and they still do not heed the warning. Let them accept at least, like Dhritarashtra. That is also good. Therefore Dhritarashtra was saved at the end, in spite of so many things. By the help of Vidura, he left home and became successful. Because he believed in Krishna. The Krishna is God, yes, but I cannot control myself. He admitted his deficiency. Therefore he was liberated. अभी आपने अपना तो लिया Salpamapi asya dharmasya trayate mahato bhaya. Because he admitted Krishna is God, therefore at the end he was liberated. Mahato bhaya. But Duryodhana would not admit. Huh? But Duryodhana would not. Even though Krishna showed his universal form, Duryodhana still he would not agree. No, Duryodhana also agreed. All of them got salvation. That is mentioned. Anyone who was in the battle of Kurukshetra, all of them got salvation. By their being killed in the battle, they all got liberation and salvation. That is stated by Bhishma Dev. Swarup. Swarup means they came to their original Krishna consciousness, all of them. Hare Krishna, Hare Krishna. मान लें कृष्ण से भगवान से उसको मान लें तो फिर उसका जीवन सफल होगी. खाली इतना और कुछ करे ना करे, इतना ही मान ले जो भगवान कृष्ण है. इतना मानना ही मुश्किल हाँ? बगैर कुछ करे इतना मानना बहुत ये वो तो उसको बता दिया नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधम. मना देंगे मानेंगे कैसे नहीं मना हाँ, देंगे ये शक्तिमती, इसी शक्तिमती. मना देंगे उसमें क्या है और हमको गुरु महाराज ने अपना ही लिया है तो हम छोड़ने वालों में नहीं है चलिए हटने वाले नहीं, आपके पास बहुत शक्ति है, हम जानते हैं. अब मटेरियली बच्चे लोग को, जिनके सब बड़े बड़े बच्चे हैं आप लोग कैसे, बड़ा काम करने वाला, अब स्पिरिचुअली कीजिए. अब स्पिरिचुअली बच्चा पैदा कीजिए. और एक एक बच्चे को साथ लेकर आऊंगी वो भी दिन दूर नहीं है उसकी तैयारी में हूँ एक एक ड्यूटी बन के रहेगा Materially, to get bacche, you require the help of husband. Spiritually, you don't require anyone's help. It's Krishna only. That's all.